Hey everyone, what's up? So I have started learning Ionic. After spending the whole day searching for its learning resources and its presence on the net, now I can say that it's easy and well supported. I mean, Ionic have been into market for quite some time now. Ionic is in its fifth version at present, so the support for it is great. By support, I mean official documentation, communities to provide solutions to problems developers face, question answer websites such as Stack Overflow, tutorial website, video tutorial websites, etc. However, learning Ionic is not a straightforward thing. We must have the knowledge of quite some technologies beforehand, such as HTML, CSS, JavaScript, any one framework such as Angular or Vue or React. And then, after learning these four things, we can go for Ionic. Let's take a tour of the resources. So my favorite browser is Firefox, and let's go to Mr. Google. Let's search Ionic. So ionicframework.com is the official website of Ionic framework. We go to developers and installations. Here we will find a link to overview. See, Ionic framework is an open source UI toolkit for building performant, high quality mobile and desktop apps using web technologies HTML, CSS and JavaScript with integrations for popular frameworks like Angular and React. Clearly there is a statement using web technologies HTML, CSS and JavaScript. When I pondered through the different resources on the net for HTML, CSS and JavaScript, only one name flashed. See, HTML tutorial. W3 Schools. W3 Schools is quite a learning resource for web technologies. All the resources are very well structured and documented on W3 Schools. So for HTML, CSS and JavaScript we need no any other resource. Just W3 Schools is enough. Then there is this Angular and React. So I am going to use Angular for Ionic development, and it's your choice whatever framework you can use to learn Ionic. So let's go for Angular. If you want to see Angular tutorial, and first on the list first is Udemy, the second one is Angular IO tutorial. So this is angular.io is the official documentation for Angular, and you can see there is a whole list of topics for learning to get a hold of Angular. So we have W3 Schools and then we have got Angular IO. You can if you think that you can learn more easily with video tutorials, you can go for Udemy, Udacity or Coursera or any other video tutorial website as well. For me, I particularly like to learn from websites or from books, but at present as COVID-19 is underway and the shops are not yet open, we have to rely on online learning resources. So this is also a cool way. I like this. So learning Ionic framework. To learn Ionic framework, we should know some what HTML, CSS and JavaScript and Angular and then Ionic. If we go through this first four lines, just see what is written there. Ionic framework is an open source UI toolkit for building performant, high quality mobile and desktop apps. तो ये जो आपको एक छोटी सी लाइन दिखी बहुत अच्छी है, मोबाइल एंड डेस्कटॉप एप्स. सी गाइस, एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है, वो ये है कि वाई आर वी लर्निंग आयनिक, वाई शुड वी लर्न आयनिक. सो इसका एक बहुत अच्छा सिंपल आंसर ये है कि देर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज टू बिल्ड
web applications and PWAs and SPA and mobile uh, apps एंड डेस्कटॉप एप्स, और हर चीज़ के लिए आपको अलग टेक्नोलॉजी को मास्टर करना होगा. बट द गुड थिंग अबाउट आयनिक फ्रेमवर्क इज दैट विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल कोड बेस वी कैन मेक मोबाइल एप्स, डेस्कटॉप एप्स एंड PWAs एंड SPAs एंड एवरीथिंग. सो सोचो, आपको 3 चीज़ें पता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एक एंगुलर और एक आयनिक, ये 5 चीज़ें हैं. HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के साथ आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तब जाके हम डेवलप कर पाएंगे किसी वेब सर्वर को या किसी डायनेमिक वेब एप्लीकेशन को. और वो वेब एप्लीकेशन सिर्फ वेब एप्लीकेशन ही रहेगी, इट विल नॉट बी अ मोबाइल ऐप. बट अगर हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर पढ़ लें एंड आयनिक कर लें तो वी विल बी एबल टू डेवलप अ डेस्कटॉप ऐप, वी विल बी एबल टू डेवलप अ मोबाइल ऐप एंड अ मोबाइल ऐप ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, on Android as well as iOS. We can also develop progressive web apps, single page applications. So a whole lot of platforms can be taken care of by learning Ionic frameworks. So that is why I am learning Ionic framework. So you may now know the reason why I am learning Ionic framework and why should we learn HTML, CSS, JavaScript and Angular or React or Vue.js. Either of these 3 frameworks, not all. ठीक है, तो ये तो गई पहली चीज़. इसमें एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन मैं देना भी चाहूँगा और लेना भी चाहूँगा, वो ये है कि बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वी मस्ट नो सर्टन टर्मिनोलॉजी. दे मे नॉट कंस्टिट्यूट टू अवर नॉलेज, आई मीन उससे हमें डेवलपमेंट में हो सकता है कोई हेल्प ना मिले, बट अगर उनके बारे में हमें पता होगा तो वेन एवर यू आर टॉकिंग टू समवन इट वुड बी ईजी फॉर आइदर ऑफ यू टू कम्युनिकेट थिंग्स. जैसे अगर आप देखो तो इन दीज 4 लाइन्स, इन द फर्स्ट लाइन itself there are 4 to 5 terms that are very important. First is framework. So what is a framework and what is a library? What is the difference between a framework and a library? So we should know that. Second term is open source. Third is UI toolkit. Fourth term is performant. So इसमें जो सेकेंड टर्म है ओपन सोर्स, उसके बारे में आई वुड लाइक टू से समथिंग. ओपन सोर्स इज अ रेवोल्यूशन, ओपन सोर्स इज अ थॉट प्रोसेस. व्हेन आई आस्क स्टूडेंट कम्युनिटी और एनीवन एल्स who is not who does not know what is open source, they just say it is free software is known as open source software. So this is like killing the spirit of open source. Yes, software is free, no doubt, but from where does that free software come? Who works for free nowadays? No one, right? So just take the example of a lake. If we go to a freshwater lake and we can drink some water from it, it requires an effort to maintain that lake. Now we should spend some time cleaning it. We should clean it from germs, and then only people can drink water from it. सिंपल सी बात है, अगर पानी खराब होगा तो कौन पिएगा? तो पानी को साफ करना, उसको वहाँ पे भर के रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन ओनली उसे पीने में मज़ा आएगा. और ओपन सोर्स भी कुछ ऐसा ही है. सो देयर इज़ अ होल कोड बेस, उसे बहुत सारे लोग मिलके मैनेज करते हैं, उसको रिप्लेनिश करते हैं, उसमें एनहेंसमेंट्स करते हैं, उसमें से बग्स को निकालते हैं, ठीक है, ताकि सो दैट इट कुड बी यूज्ड बाय पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर फ्री. सो it is free, yes, definitely, but it also needs active contribution from the contributors. So if you are a software developer, I would request you, if you have used any open source software in your lifetime, it's a duty to contribute to open source softwares. Now being said that, अब बहुत लंबा टास्क अपने पास, जावास्क्रिप्ट भी पढ़ना है, HTML और CSS भी पढ़ना है, तो आई थिंक आई शुड एंड दिस फर्स्ट वीडियो. इतना कुछ पढ़ लिया अब तक कि अब लगता है कि थोड़ा सा पढ़ाई ख़त्म हो, तो पढ़ाई ख़त्म नहीं हो रही, पढ़ाई बढ़ती ही जा रही है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं. पहली चीज़, अगर पढ़ाई का मन नहीं होना तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए.
और अगर आ गए हो तो फिर पढ़ाई से पीछे नहीं हटना चाहिए. So it's a lot of learning, lot of implementation, and it's a task. I mean, it's not an end. मतलब कोई, it is not a destination actually. It's a journey. Software is a journey, and after so many years, about 10 to 15, 12 years of experience in software industry, एक नई टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करना अपने आप में एक चैलेंज है. बट ठीक है, आज से 12 साल पहले जो एक प्रण लिया था कि नहीं भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, तो प्रण तो प्रण होता है ना. सो आयनिक इज़ द नेक्स्ट टारगेट. और अब मैं कल थोड़ा सा देखता हूँ कि भाई HTML पढ़ना है, CSS पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, फिर एंगुलर भी देखना है, उसके बाद आयनिक भी पढ़ना है. तो कैसे आगे जर्नी जाती है. थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी ऑन दिस जर्नी. Thanks a lot.